Question 7. A particle P of mass 0.3 kg rests on a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal. This is a particle inclined plane making angle theta with the horizontal. This is horizontal, where sine theta, the value of sine theta is given 7 over 25. A horizontal force of magnitude 4 Newton acting in the vertical plane containing a line of greatest slope of the plane is applied. This force, 4 Newton force, is applied on this particle. The particle is on the point of sliding up the plane. यहाँ पे limiting equilibrium है because the not particle is not moving but just on the point of sliding up. इसकी मोशन को हम अपवर्ड मोशन को स्लाइडिंग अप कंसीडर करेंगे तो plane is rough, so there will be a resistance force. Show that the coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. We have to find this coefficient of friction. Mu हमने find करना है. This is a particle P, angle is theta, sin theta, the value of sin theta is given. A horizontal force is applied on this particle. ये horizontal है, इसके horizontal surface के पैरेलल ये force यहाँ पे apply हो रही है. Now first we resolve this the forces acting on this particle. The particle is on the point of sliding up. First we resolve this force P. This component perpendicular to the plane. This component is along the inclined plane. Angle same as this. This is theta. ये थीटा है और ये भी थीटा होगा. तो कंपोनेंट्स हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स है. This component will be 4 sin theta, 4 cos theta. Now we will resolve the weight of the particle acting vertically downward, that is 0.3 g. This is the weight. Now we will resolve this weight. One component along the plane, the other is perpendicular to the plane. इसका एक component जो है ये perpendicular to the plane, other component is along the plane. So this angle will be the same as this. So components 0.3 g sin theta, 0.3 g cos theta. Normal reaction acting perpendicular to the normal to the plane. Since the particle is on the point of sliding up, friction opposes the motion. Direction of the friction will be downward. F. F is equal to mu r. Now, because the
a particle is sliding up. No, we will use here the Newton cycle law of motion. Net force हमारे पास होगी 4 cos theta, 4 cos theta minus 0.3 g sin theta minus f. f जो होता है ये होता है म्यू r. By using Newton's second law of motion, F is equal to ma 4 cos theta, net force 4 cos theta minus 0.3 g sin theta, this component minus 3 g sin theta minus mu r, force of friction mu r के इक्वल होती है minus mu r is equal to 0 because acceleration is 0. F is equal to ma. Acceleration is 0 because the particle is at rest just on the point of sliding up, limiting equilibrium. So mu हमने फाइंड करना है, इस इक्वेशन में से mu हमने फाइंड करना है, बट व्हाट इज r? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड r. ये आप देख रहे हैं कि ये r हमारे पास अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन टू फोर्सेस हैं. तो सो r will be equal to sum of this and this force. So we can find r from here. R will be r is equal to 4 sin theta plus 3 cos theta. अब हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज कहाँ से लेनी है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. sin थीटा की वैल्यू हमें sin थीटा की वैल्यू गिवन है 7/25. तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड लाइक दिस. जिसको ऐसे फाइंड कर लेंगे हम. एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. लेट दिस इज थीटा. sin थीटा इज गिवन 7/25. So this is 7, this is 7, this is 25, और by Pythagoras theorem this will be 24. तो अब हम यहाँ से इस ट्राइंगल में से sin थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी. r will be equal to 4 sin theta is 7/25 plus 3 cos theta will be 24 from this triangle. From here cos theta will be 24/25. After calculating we will get r is equal to 4. r is equal to 4 Newton. ये r हम यहाँ पे पुट करेंगे, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 cos theta. Cos theta is equal to 4 cos theta 4 into 24/25 minus 0.3 into 10 into sin theta is 7/25 minus mu. We have to find r is 4. After calculating we get 96/25 minus 21/25 is equal to 4 mu. From here we can find the value of mu, which is 3/4. ये mu की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि हमने शो करनी थी. ये 3/4 शो हो गया. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फोर्स acting horizontally is replaced by a force of magnitude 4 Newton acting up the plane parallel to the line of greater slope. Now ये फोर्स 4 न्यूटन जो है, अब ये
अलोंग द प्लेन एक्ट करेगी, तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। 4 न्यूटन एक्टिंग अप द प्लेन पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। ये 4 न्यूटन फोर्स जो है एक्टिंग अप द प्लेन पैरेलल टू a line of greater slope, find the acceleration of p. Now again diagram will be, this is the particle, slope is same, this is theta, this particle is p. Now the force is acting like this along the plane. 4 Newton force of a weight vertically downward, mg, resolving this component and this component. This is theta. This component is 0.3 g sine theta. The force acting horizontally is replaced by a force of magnitude 4 Newton acting up the plane parallel to the line of greater slope. Find the acceleration of p. अब इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा वो हमने फाइंड करना है। तो अगेन यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस पार्ट में अब वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। Force of friction remains the same, that is mu r। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको हमने म्यू आर लिख लिया है। अब इक्वेशन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स along the plane minus component of weight 0.3 g mg sin theta minus mu r, म्यू अभी हमने शो कर दिया है, म्यू इज 3/4, म्यू आर इज 0.3 g cos theta is equal to m a। This is r, म्यू आर। अब आर जो है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में आर फोर्स जो है ये इस कंपोनेंट वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगी। Now putting the value of cos theta and sin theta, it becomes 4 minus 3, value of sin theta is 7/25 minus 3/4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 into 24/25 is equal to ma। Simplifying 4 minus 21/25 minus 54/25 is equal to ma। From here, after calculating, we get 10/3 meter per second square. This is the answer. Now, part C of this question is, starting with P at rest, the force 4 Newton parallel to the plane acts for 3 seconds and then removed. Find the total distance traveled
until P comes to instantaneously at rest. अगेन इसकी डायग्राम बनाते हैं. Inclined plane, theta, this is a particle, start from rest, initial speed 0 और 3 सेकंड में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा. आफ्टर 3 सेकंड 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे. थ्री सेकंड में पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा. अब हमने देखना है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है. फिर जब पार्टिकल 3 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा तो वो ये फोर्स रिमूव हो जाती है. तो ये पार्टिकल एट वंस रुकेगा नहीं. ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे जाके कम्स टू रेस्ट. यहाँ पे स्पीड 0 होगी. तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. तो टोटल डिस्टेंस मीन फर्स्ट वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस देन दिस डिस्टेंस. तो दोनों डिस्टेंस जो है ना उनको ऐड करके वो टोटल डिस्टेंस होगा. तो फर्स्ट we will find the speed at this point. यहाँ पे हम स्पीड फाइंड करेंगे. यहाँ पे उसके लिए इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड when it start from rest, initial speed is 0. इनिशियल स्पीड इज 0 और फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है इस पॉइंट पे. एक्सेलरेशन वी हैव already found 10/3 meter per second here. T is equal to 3. Now using this equation, V is equal to U plus AT. V will be, this is 0 plus A is 10/3 and T is 3. So V is equal to 10 meter per second. We have found the speed at this point. यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड कर ली है which is 10. यहाँ पे स्पीड जो है हमारे पास 10 आ रही है. अब हम इजीली ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा सिंस इनिशियल स्पीड इज 0, t is equal to 3 सेकंड. 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है. एक्सेलरेशन वी हैव 10/3. वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन. s is equal to ut plus 1/2 at square. S will be is 10/3. T square, T is 3, 3 square 9. So we get S is equal to 15 मीटर. ये डिस्टेंस हमने 15 मीटर कौन सा फाइंड किया है. ये डिस्टेंस जो है हमने ये वाला फाइंड कर लिया है. नाउ वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस. ये इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अब उस पर फोर्स कोई नहीं रही. फोर्स ये जो रिमूव कर दी जाती तो ये डिस्टेंस कितना होगा. अब ये क्योंकि ये कम्स टू रेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेट होगा. तो वो डी एक्सेलरेशन हमने पहले फाइंड करना है. यहाँ से यहाँ तक मूव किया है तो डी एक्सेलरेशन क्या होगा.
क्योंकि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के नाउ वी विल टेक दिस स्पीड एट दिस पोजीशन, we will take it initial speed to find this distance. Now we are taking this initial speed, this is the final speed is 0, but we need deceleration. Deceleration हमने कैसे फाइंड करना है? अब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो उसमें फोर्स, अपवर्ड फोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो वेट का कंपोनेंट और अपोजिंग फोर्स जो है वो अप्लाई होंगी, तो हमारे पास डी एक्सलेशन आ जाएगा। तो फॉर दिस वी विल फाइंड डी एक्सलेशन। अपवर्ड फोर्स नहीं है हमारे पास, डाउनवर्ड फोर्स वेट का कंपोनेंट है, ये देख रहे हैं आप, वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ये वेट का कंपोनेंट, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दिस इज आर, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू आर होगी, वो अपोज करेगी क्योंकि सरफेस रफ है। तो सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जीरो अपवर्ड फोर्स नहीं है, अपोज करने वाली फोर्स है वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर using Newton's second law of motion. This is net force is equal to m a, mu we have already found. Putting the values we get -3 sin theta 7/25 minus mu is 3/4, r is 3 into 24/25। देखिए इन दिस केस हमारे पास म्यू जो है, आर जो है इसके इक्वल है इस कंपोनेंट के, दिस कंपोनेंट इज 0.3 g cos theta। तो फाइनली is equal to ma, this becomes -21/25 minus 216/100 is equal to ma. Finally we get minus, taking LCM, minus 84 minus 216/100, 0.3a. After calculating we get a is equal to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डी एक्सलेशन आ गया, नेगेटिव का साइन है, यहाँ इतनी मूवमेंट के लिए डी एक्सलेशन हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। नाउ वी विल यूज दिस डाटा टू फाइंड द डिस्टेंस। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड इसको लेंगे और फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 0, डी एक्सलेशन हमारे पास है, वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, फिर इस डिस्टेंस में ऐड करके टोटल डिस्टेंस बताएंगे। नाउ वी आर यूजिंग for second distance initial speed. Now we have initial speed is 10 meter per second, final 0 because comes to rest, acceleration just we have find -10, s हम find कर सकते हैं using this v square minus u square is equal to 2 as, 0 minus 100 is equal to 2 minus 10 into s. We get this distance is equal to uh, 5 meter.
तो सो टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या होगा, एक डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया है और दूसरा डिस्टेंस हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, ये पहले वाला डिस्टेंस ये है। अब डिस्टेंस ये है, दोनों को हम ऐड करके वो आंसर लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस इज 15 plus 5 that is equal to 20 meter. This is the final answer.